whenever you are stuck in a problem, our arowana comes to the rescue. Hey, what's up guys, Abhishek here from Auroflix. So today we are going to talk about the color of super red arowanas. तो हम देखेंगे कि सुपर रेड आरोवाना जो है वो उसको अलग अलग हम कैसे मतलब उसका कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं कि मतलब कैसे वो कलर वाला वो फंडा है. ठीक है. सो यू गोना लुक एट द एंटायर कलर फैक्टर अराउंड सुपर रेड आरोवानास. we are going to look at a particular video. ये वीडियो मैंने ही शूट किया है. आई हैव शॉट दिस वीडियो ऑफ माई ओन सुपर रेड आरोवाना. ओके, आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ द आरोवाना इन अ मिनट. बिफोर दैट, चैनल पसंद आ रहा है तो वो सब्सक्राइब कर लेना. वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना. चाय का कप लाना भूल गया था मैं, तो चाय पीते हुए आज ये वीडियो बनाएंगे हम. राइट, सो लेट्स स्टार्ट बाय प्लेइंग द वीडियो. मैंने आई हैव टेकन दिस वीडियो. मैंने ये वीडियो जो लिया है ये काफ़ी अलग अलग लाइट्स में लिया है. ऑल द लाइट्स आर टीका लाइट्स. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीका लाइट्स. ठीक है, तो आई हैव ऑल ऑफ दैट. तो मेरा खुद का आरोवाना है ये, जैसे मैंने कहा खुद का सुपर रेड है मेरा. दिस इज़ फ्रॉम वन ऑफ द फेमस फार्म्स कॉल्ड एल्किंडो फार्म. ओके, it is a famous farm क्योंकि from what I see from their website they have won a lot of competitions and all of that. So the arowana that I have is also a decent and good arowana. I have had this super red arowana for just a little under 3 years. So I could kind of, you could write me off as someone who is as got the experience of keeping super red arowanas. ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मुझे भी है. मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे, लेकिन आई हैव ऑल्सो गॉट गुड एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव केप्ट एन आरोवाना, वन पर्टिकुलर आरोवाना फॉर मोर ऑलमोस्ट 3 years ना. तो देखते हैं, चलो वीडियो को देखते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट. तो शुरू करते हैं. इसका वॉल्यूम कम कर देता हूँ मैं ताकि इट डज़ नॉट डिस्टर्ब अस. चलो ओके, तो अभी अगर आप देख रहे हो दिस इज़ माई सुपर रेड आरोवाना. इसके स्केल्स देखो आप, लुक एट द स्केल्स. इट इज़ ऑल नाइस एंड रेड. लुक एट द गिल प्लेट, इट इज़ ऑल्सो रेड. डजंट कवर द होल एरिया बट ऑलमोस्ट आ रहा है धीरे धीरे नीचे के गिल प्लेट के पार्ट में भी. बट इफ़ यू सी द स्केल्स, द रिम्स ऑफ द स्केल्स, दे आर वेरी रेड एंड देर इज़ अ गुड स्प्रेड ऑफ रेड कलर. वेरी वेरी डीप रेड is what it is. So एकदम से आप देखोगे इसको तो you will feel like probably this is the best super red arowana in India because it is so red. Normally it थोड़ा difficult होता है to get a red arowana, मतलब actual red arowana. इसको देख के आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो मतलब red. Look at the gill plate is so deep red. इतना red ये arowana है. But now I'm zooming out to give you a view of how the top vinyl looks. ऊपर मैंने vinyl रखा हुआ है. You can clearly see that the color is red of the light. So this is a tica color up to light which basically does not color the water but it colors up the arowana to look more red. So typically this arowana of mine is not completely red but this light gives us the illusion that it is probably red. इसके rims, इसके scale red है, इसका gill plate red है, तो it is it probably gives you that particular impression. तो इसको वहाँ पे 1 मिनट के लिए stop कर देते हैं. So this is what a tica color up light does to a super red arowana. There are lot of people who buy the tica color up light. Actually got expensive है. Tanning वगैरह तो करता नहीं है light. It just gives you that it's more of a viewing light जहाँ पे आप अगर if you have a super red arowana which is small 12, 13, 14 इंच का which generally is not red. वो deep red आता नहीं है उतने साइज में, 10, 11, 12 इंच के साइज में. At that time you tend to put in this viewing light to you look at it and it looks red. So it's a nice feeling. So that's that. Now the next video that we are going to see is going to be the same arowana, my same super red arowana, but this time in tica white light. This is the tica 13,000 Kelvin white light. It's a white T5 tube, okay, of tica which is submersible. So let's have a look at it. So now you see the same arowana. I have not changed the arowana. It is the same arowana. So if you see the spread on the scales are the same. Okay, the gill ka spread is the same. However, the color is no longer red. It is now looking like more of a darker yellowish shade, a little light orangish shade kind of a thing. Spread वही है लेकिन
कलर अब रेड नहीं दिख रहा है बिकॉज दिस इज़ प्योर वाइट लाइट. ऊपर आपको दिख रहा भी होगा थोड़ा सा दैट इट इज़ अ वाइट ट्यूब टीका का जो 13,000 केल्विन का वाइट टैनिंग लाइट. इट जस्ट गिव्स यू दैट वाइट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. I'm giving you a close-up view of it, and the very interesting thing about this arowana is about 17 to 18 inches, and it doesn't have a drop eye. So very rarely you will find a super red arowana of this size not having a drop eye. So that is the speciality of Elkindo farms. They generally come from very good genetic line, is what I have been told. So as a result of that, this arowana is not having a drop eye, which is a really really good thing. So ये प्योर वाइट लाइट में आपको क्लोजअप में दिखा रहा हूँ. इसके गिल्स देखो आप, लुक एट द गिल प्लेट्स, लुक एट द द स्केल, सी हाउ इट इज़ ऑरेंजिश. जितना क्लोज जा रहा है उतना थोड़ा सा डीपन होता है ऑरेंज, बट ओवरऑल इट इज़ अ लाइट ऑरेंजिश yellowish kind of a shade. It does have a little bit of a PLJ though. When it was a baby, it hardly had, just a little bit of PLJ when it was a small baby fish. While I am editing this video, मैं कोशिश करूँगा आपको एक क्लिप दिखाने का. जब इट वॉज अ स्मॉल बेबी 11 इंच पे ख्वाजा शेख हैड गिवन मी दिस फिश. सो एट दैट टाइम इट हैड अ लिटिल PLJ. नाउ it's a little more, but it is none compared to the many other super Reds that I have seen which has a lot of PLJ. So this is in white light. So I have some bonus content also for you in two other views. So let's look at the next one, and I'll tell you what light that is in. Right, so this now that you can see is the same arowana again, same tank. I've just changed the light now. This I am using the tica gold deep tanning light. Okay, so this is also a T5 tube, but it is golden the light. तो आप अभी अगर आप देखोगे, if you see now, the color of the fish is a lot more orangish. जो orangish tone था, जो बहुत light था in that white light, in this it is looking a lot more deeper. So it gives you a more deeper orangish kind of a color. बाकी तो वही है, it's the same arowana. So the spread on the scales, the gill, everything is the same. Now see, I'm zooming out. उतना I don't know if you can make out or not, but that vinyl on top is now looking a little golden kind of a thing. So उस level पे आपको really पता चलेगा जब आप zoom out करोगे. That is when you get to know the color of the light, that whether it's a color up light being used or a white light or a golden light. So this is the third one. Coming to the last one that I have done, this is like a real bonus one. उसका मेरे को मतलब एकदम क्या है ना, एकदम आइडिया सा आया था लास्ट मिनट में कि चलो कुछ चेक कर देते हैं, जो मतलब देख के मेरे हॉबीस्ट फ्रेंड्स को मज़ा आएगा. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. आई एम गोइंग टू टेल यू वंस आई स्टार्ट द वीडियो कि इसको मैंने कैसे शूट किया है. सेम फिश अगेन, सेम सुपर रेड arowana, Elkindo. Okay, this what you see here is no lights, it is pure sunlight, pure evening sunlight. अब इस पे आपको दिखेगा प्योर इसका कलर क्या है. ये देखो, नाउ यू कैन सी दैट इट इज़ वेरी डीप ऑरेंजिश and it has got little bit of that hint of red on the gill plate अगर आप देखोगे. So this is in pure sunlight. So this is the real absolute color of this fish, and it is not red like I showed you in the first video जहाँ पे color up light use किया था. So this is my super red arowana from a very well known farm, Elkindo Red. ऐसा नहीं है कि is the first time it has come to India or anything. There are other Elkindo Reds also in India. Khwaja Sheikh and Zishan Sheikh have have brought in a lot of Elkindo Reds in India. This is one of them. I had bought it quite expensive though. तो ये था, this is what I wanted to show you in terms of how a super red arowana looks in different conditions, in different lighting environments. How does it look under color up to light, which is more of, it gives you the red feeling. Under white light, which is the 13,000 Kelvin tanning light, it gives you the very neutral experience, but still probably doesn't give you the exact color of the arowana. Third one was a tica gold deep tanning light. उसमें भी it doesn't give you the real feel. This is the sunlight, no light, just pure sunlight. इसमें शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है this is giving you the real color of the fish. Okay, besides this I also have another arowana. A lot of people know it's my golden crossbelly, which I got from KEA farm in Malaysia. Najib Sheikh had got that fish from me from Sharizal, and Sharizal is a very close friend of mine, and we always talk whenever we get an opportunity. Jack Lee Chinhan from Sing Arowana in Singapore is also a very close friend of mine, and I do know a couple of people from Indonesia, Vidit Tran and
and William. So these are the people that I really know from, you know, from where these arowanas originate. So I tend to have some information at least about arowanas. So I wanted to share the same with all of you, that वो कैसा दिखता है red arowana, so that it also helps our hobbies, that when they see a video of a super red arowana, they will be able to determine that क्या लाइट यूज़ किया गया है टू डिस्प्ले दैट arowana. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना. मेरे एक वीडियो को ऑलमोस्ट 4 लाख लाइक्स, 4 लाख व्यूज़ आए हुए हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स, यू नो, यू आर नॉट सब्सक्राइबिंग. तो मतलब 4 लाख अगर व्यूज़ आए हुए एक वीडियो को, उसका अगर मतलब 110 भी पकड़ोगे तो कम से कम 40,000 सब्सक्राइबर्स तो होने चाहिए. तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो. इट इज़ रियली रियली हेल्पफुल फॉर मी एंड इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़. ओके, हैविंग सेड दैट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं अगले हफ्ते वापस आरोफ्लिक्स में. तब तक के लिए पीस.